ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट ईयरली पास पेपर। सबसे पहला पेपर जो हम लोग करेंगे, इट इज गोइंग टू बी मई जून 2020, पेपर 1 वेरिएंट 1। ठीक है, मई जून 2020, पेपर 1 वेरिएंट 1। क्वेश्चन नंबर 1, the diagram shows the graph of a cubic curve y is equals to f of x. Find an expression for f of x. ओके, तो मुझे अगर कर्व दिया हुआ है तो कर्व से इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए हमेशा हम एक्स इंटरसेप्ट चेक करते हैं। लेट्स चेक दी एक्स इंटरसेप्ट्स। यहां पर एक्स की तीन वैल्यूज -2, -1 एंड 5 है। अगर एक्स की तीन वैल्यूज ये हैं, तो अगर मैं वापस जाऊं, रिवर्स चले जाऊं, उल्टा, तो एरर, कैन यू टेल मी what must have been the three brackets? X plus 2, x plus 1 and x minus 5. Yes, but it does not end over here. कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद ये तो आपने x इंटरसेप्ट की हेल्प से ये लिख लिया, अभी आपको y इंटरसेप्ट की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। y इंटरसेप्ट की हेल्प कैसे लेंगे? We know for a fact that the value of x is 0 over here. आप x में 0 पुट कीजिए और देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है। प्लीज टेल मी y कितना आ रहा है अगर हम x में 0 पुट कर दें? -10. -10, लेकिन ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, y की वैल्यू तो 5 है, तो -10 को 5 बनाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2. 1/2 इज रॉन्ग। सही से बताओ, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1/2. -1/, यस, -1/2। ये हमारे कर्व की क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ गई। हम इस तरह किसी की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट लुक एट द एक्स इंटरसेप्ट्स, मेक द ब्रैकेट्स, and then look at the y-intercept and multiply accordingly. Solve f of x is lesser than or equal to 0. अब दो ऑप्शन है, या तो आप इसी को लेसर देन और इक्वल टू 0 कर दें। भाई अगर दो वैल्यूज हो तो पता होता है कि लेस देन में जोड़ के लिखना है। तीन वैल्यूज में लेसर देन के साथ कैसे जोड़ के लिखो? तीन वैल्यूज में तो नहीं कर सकते, तो आप ग्राफ से चेक करें। f of x is lesser than or equal to 0 का मतलब है x एक्सिस से नीचे, lesser than or equals to 0। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी एक x की रेंज बन जाएगी -2 से लेके -1 तक। एंड यहां से हम आंसर क्या लिखेंगे? X is greater than 5. वेरी गुड, क्योंकि यहां से ये नीचे जा रहे हैं कर्व, और यहाँ x की वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं, बढ़ती जाती है। x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। Mars, did you understand this? Yes, sir. Okay. Question number 2. Write down the amplitude. ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना हमने, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, पीरियड का फॉर्मूला, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला, मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला। कीपिंग दैट इन माइंड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? 2. 2। अब इसका स्केच बनाना है, तो स्केच बनाने के लिए हम बेसिकली स्टेप निकालते हैं, और कॉस के लिए स्टेप का फॉर्मूला होता है 90/b। साइन इसका b कितना है? 1/3। 1/3।
90 डिवाइडेड बाय 1/3 जो कि होते 270। सर पार्ट ए में पीरियड बताना था। ओ आई एम सो सॉरी। और कोई मुझे बता भी नहीं रहा। नोबडी इज टेलिंग मी पीरियड निकालना था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीरियड? 360 upon b. 360 अपॉन बी। कितना आएगा? 1080. करेक्ट। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इनकी वैल्यूज जो है ना वो 180 के गैप से है, जबकि हमारा स्टेप आ रहा है 270। तो मुझे 270 के गैप से भी वैल्यूज मार्क करनी है, मुझे 180 के गैप से भी वैल्यूज मार्क करनी है। तो ऐसा करो, स्टेप ले लो 90 डिग्रीज का, तो उसमें ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 270 वाली, 90 वाली सारी आ जाएंगी। 90, 180, 270, 360, -90, -180, -270, -360. So define this equation in your calculator. Start में और स्टेप में 90। स्टेप मुझे बताइए -360 पे क्या वैल्यू आ रही है? -2. -2। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड। -270 पे -1. 180, 0. -90, 0.732. ओके, 0, 1. 90, 0.732. 180, 0. 270 -1. and 360। -2. ओके, किसी से नहीं बन रहे तो मुझे बताओ। Musa, have you drawn the sketch? Yes, sir. Okay. Question number 3। मूसा, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? Sir, differentiation. डिफरेंशिएशन के अंदर भी ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के मूसा मुझे बताइए कि किसका रेट दिया हुआ है और किसका रेट फाइंड करना है। सर रेडियस का रेट दिया हुआ है और एरिया का ठीक है, यानी कि dr/dt दिया हुआ है, dA/dt फाइंड करना है। r = 3। किसी भी रेट के क्वेश्चन में कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी फाइंड इन एनी क्वेश्चन ऑफ रेट? dA upon dr. Yes, the gradient. We find the gradient, and in order to find the gradient, हमें इक्वेशन ही नहीं दी थी इस क्वेश्चन में।
तो हम किसकी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे? The equation of a circle, area of circle. The area of circle, which is pi r square. Differentiate this and find out the gradient. और में r की वैल्यू पुट कर दीजिए. You will get the answer of gradient. अच्छा, नॉर्मली रेट का फॉर्मूला होता है dy अपॉन dt is equals to dy upon dx multiply by dx upon dt. But for this question, y has been replaced with a and x has been replaced with r. तो जहां जहां x आ रहे हैं वहां वहां r आ जाएगा. तो हमारा फॉर्मूला बनेगा dA upon dt is equals to dA upon dr into dr upon dt. So what is our final answer? 30 pi. 30 pi centimeter square per second. उसने बोला था in terms of pi. Do not forget this condition. यूनिट के मार्क्स नहीं होते, अगर आप लिख दें तो ज्यादा अच्छा. Question number 4. Which topic is this? Surds. It is surds. Find the positive solution of this equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करना इस पे बहुत मुश्किल है. Now, because middle term breaking is very difficult, what am I going to apply to solve this equation? Substitution. No. Quadratic formula. Quadratic formula. A is equals to 5 plus 4 root 7. B is equals to 4 minus 2 root 7. C is equals to minus 1. Although question में लिखा हुआ है do not use a calculator, लेकिन मैं सारे स्टेप्स शो करूंगा और कैलकुलेटर से कंफर्म भी करते रहूंगा कि मेरे स्टेप सही है या गलत. Please simplify this.
बिकॉज वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव सोल्यूशन, तो मैं माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्लस के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। कैन एनीबडी टेल मी इस स्टेप के बाद मुझे क्या करना चाहिए? Rationalization. नो। फिर टू कॉमन ले लो उसमें। यस। टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो। It is now that I am going to rationalize. And Arad, what am I going to multiply and divide this with? 5 minus 4 square root 7. Yes. Denominator is always a square minus b square. Denominator का आंसर क्या बन रहा है? What is the denominator you are getting? Minus 87. Let's take minus 3 common from the numerator. तो भाई आपने आंसर जो है ना वो इस फॉर्म के अंदर देना है, a+b√7। तो इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। Where a and b are fractions, तो हमारा भी तो a और b फ्रैक्शन आ रहा है, हमारा भी a और b फ्रैक्शन में आ रहा है। Saim, are you done? Yes. Question number 5. Find the equation of the tangent. किसी भी tangent की या नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? Coordinates. कोऑर्डिनेट्स। x के अंदर 1 पुट करके y की वैल्यू निकालिए।
ln 2 अपॉन 2। ऑल्दो उसने बोला है फाइनल आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस पे दे दो, लेकिन मैं बाद में कर लूंगा डेसिमल में। लेट्स लीव इट एज एग्जैक्ट राइट नाउ। Sir, ln 2/3. ln 2 अपॉन 3, ओके। 1 comma ln 2 upon 3. What is the next thing that we should know? The gradient. The gradient. And how are we going to differentiate this? Quotient. Quotient rule. I hope you people remember differentiation of ln. पूरा ब्रैकेट नीचे चला जाता है, ऊपर क्या न्यूमरेटर में क्या चीज आती है? What comes in the numerator? The differentiation of the bracket itself. Yes, the differentiation of the bracket. ऐसे b स्क्वायर लिखने से बहुत बेहतर था कि मैं कैसे लिख देता? Multiply it as 1 upon x plus 2 whole square. Yes. You could have written 1 upon x plus 2 whole square in the beginning, और फिर ये पूरा ब्रैकेट में आ जाता। Anyways, इसको मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ ऐसे करके। मैं तो नहीं फाइंड करूंगा ग्रेडियंट, यू विल डू इट फॉर मी। Anyone else who is getting the same gradient? Yes. Okay, let's find out the equation. y minus y1। अच्छा, अब इस y1 को मुझे जरा ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे बता दो। 0.23105.
is equals to m bracket x minus x1. Let's write down the final answer correct to 3 decimal places. इसको वहां ले जाके प्लस कर दो और फिर मुझे बताओ कि ये कितना बन रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस पर। नेगेटिव ही आएगा। माइनस हाउ मच? minus 0.692. Musa, what are you getting? Sir, same answer. Okay. Question number 6. What is the keyword? Meets. Meets का मतलब intersect, simultaneous. जल्दी से ये y उठा के इस y में डाल दो। I'm going to give you 1 minute, find out the values of x and then find out the values of y. 1 मिनट का ही है। मास एक्स की 2 वैल्यूज क्या आ रही हैं? -2 and 4/5. -2 and 4/5 और इन दो एक्स की वैल्यूज पे y कितना आएगा? Sir, 10 and -4. ओके। What is the keyword in the next part? इसमें भी मीट ही कर रहे हैं पर साइमल्टेनियस। बट नाउ विच टू लाइंस आर मीटिंग? एक की तो इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू x, दूसरे की इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। 4 स्टेप्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। मैं यहाँ बता भी देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले ग्रेडियंट, फिर M2, फिर मिड पॉइंट एंड देन इक्वेशन। लेट्स अप्लाई these 4 steps. Can anybody use calculator and tell me the gradient of AB? 5. मूसा किसका कोऑर्डिनेट यूज करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए? Sir, midpoint. मिड पॉइंट का। लेट्स फाइंड आउट द मिड पॉइंट। किसी ने निकाला है मिड पॉइंट? कैलकुलेटर से निकालो। -3/5 and 3. -3/5, 3।
-15 को वहां ले जाके +15 कर दो और मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी। 72/5। 72/5। इससे ज्यादा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 तो क्वेश्चन में ही दी हुई थी, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। ये y की वैल्यू उठा के इस y में डाल दो और हो गया साइमल्टेनियस। हाउ मच? 12/5। मास अगर x 12/5 है तो y कितना होगा? 12/5। 12/5। तो कोऑर्डिनेट मांगा था, कोऑर्डिनेट आ गया। फाइव इजी मार्क्स, 5 मार्क्स का था ये। अगले क्वेश्चन पे चलें या कोई कर रहे हैं अभी तक सॉल्व? एराद, मूसा, साइम, आर यू डन? I'm done. Yes. क्वेश्चन 7 सर्कुलर मेजर, पढ़ लो ठीक से। All right. Can anybody tell me how am I going to find the value of theta? It's very easy. Use the formula of arc length. Use the formula of arc length. The arc length is 9.6. The radius is 12. कितना आएगा थीटा? 0.8. 0.8 रेडियंस। ठीक है। Part B, area of the shaded region. Area of the shaded regions, because there are two regions, but it's easy. Area of triangle minus area of what? Sector. Sector. Minus area of sector. So half AB sine C minus half R square theta. What is the problem? We don't know A or B. Yes, we do not know the length of the triangle. 12 तो यहां तक है, हमें पूरी थोड़ी पता।
लेकिन वी कैन फाइंड आउट द लेंथ, इट्स नॉट एन इशू, और वो भी बहुत आसानी से आ जाएगी। हाउ वी कैन सर हाफ ब्रेक कर दें। दिस, यस, इसको हाफ कर दें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ओ एम ऑलरेडी पता है, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? आई ऑलरेडी नो ओ एम। It's 12. It's 12. It is the radius of the sector. It is 12. थीटा को आधा कर दो, 0.4. Apply trigonometry and find OA. On this right angle triangle, apply trigonometry. Which trigonometry should I apply to find out this? Cos. Adjacent is 12. Hypotenuse is unknown. Apply cos. And tell me the value of OA from here. Make sure your calculator is in radian mode. How much? 13.03. 13.028 भी यूज कर सकते हैं, 13.03 भी यूज कर सकते हैं। जितना OA होगा उतना ही OB होगा। साइन के बाद मैं क्या लिखूं? शुड आई राइट 0.4 और शुड आई राइट 0.8? 0.8 half r square theta for the sector. You will first tell me individual areas for the triangle and for the sector. Erad will tell me. The triangle is 60.88. $57.6. $3.28. ऑल राइट, आई होप बाकी सबका भी यही आंसर आना तो यही चाहिए, कोई मुश्किल चीज नहीं कर रहे हम लोग। मूसा, कैन यू टेल मी, अगर अगला पार्ट मुझसे कह रहे हैं फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजंस, हाउ मेनी आउटर बाउंड्रीज आर देयर इन द शेडेड रीजंस एंड कौन कौन सी? Sir, can you repeat the question? पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए हम कौन कौन सी आउटर बाउंड्रीज को ऐड करेंगे? मूसा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम कौन कौन सी आउटर बाउंड्रीज प्लस करेंगे?
Musa, we don't have time. I am waiting. Sir, can you please repeat? हैं? कितनी बार? सर डिस्कनेक्ट हो गया था असल में. ओके, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकाल लें. कितनी आउटर बाउंड्रीज और कौन कौन सी आउटर बाउंड्रीज प्लस करेंगे? सर आर्क लेंथ और ए बी. आर्क लेंथ और ए बी. इनकम्प्लीट आंसर. सर ए सी और डी बी. ए सी एंड बी डी भी ऐड करेंगे. तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या ऐड करना है. आर्क लेंथ ऑफ सी डी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी. तो सबसे पहले आर्क लेंथ निकालते हैं. एस इज इक्वल टू आर थीटा प्लस ए बी तो हमें पता ही नहीं. इस ट्रायंगल पे दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री. ये ट्रिग्नोमेट्री लगा के पहले आधी बेस निकाल लो. आधी बेस निकाल के फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना. पाइथागोरस भी लगा सकते हो लेकिन ज्यादा बेहतर ट्रिग्नोमेट्री. तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी चाहिए हमें? tan. tan. बिल्कुल. tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. कोई बताएगा मुझे कितना आएगा आधा बेस? 5.0735. मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो टोटल बेस कितनी आएगी? 10.147. Okay. How are we going to get AC? 13.03 minus 12. Yes, 13.03 minus 12, which is what error? 1.03. 1.03 plus 1.03 because BD भी उतना ही होगा. मास कितना पेरीमीटर आएगा? 24.29. Is anybody else getting the same answer? I'm getting 21.8. Yes, 21.8 आना चाहिए. What about Saim? 21.8. Okay, मास चेक करो, कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो शायद. Okay. Question number 8. Show that this can be written as this. How can I show that this can be written as this? By taking out LCM. LCM. Very good.
Again, in the denominator, you have a square minus b square. Next part. Hence का मतलब पिछला आंसर यूज करना है इंटीग्रेट दिस। तो मास मैं इसको इंटीग्रेट करने के बजाय किसको इंटीग्रेट करूंगा? 3 upon 2x minus 3 plus 3 upon 2x plus 3. वेरी गुड, लेट्स इंटीग्रेट दिस। पर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कैसे? हाउ एम आई गोइंग टू इंटीग्रेट सर दिस? ln ln वाली है, आई अग्री, वेरी गुड। ln वाली इंटीग्रेशन है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर अभी तो नहीं है लेकिन आ सकती है। मैं अपनी आसानी के लिए एंड इन ऑर्डर टू शो द एग्जामिनर ऑल द स्टेप्स मैंने इसको दो दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम कम है। ln का नाम नहीं मास, अभी मैं 3 बाहर निकाल रहा हूँ। दोनों में से अब बताओ, मुझे ln बनाने के लिए डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर चाहिए होती है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि ऊपर 2 आ जाए और ये ln बन जाए। यही काम हम यहां भी करेंगे। कुछ बच्चे डायरेक्टली लिखते हैं आंसर, वो लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है आप लिख लें, बट दिस इज बेटर। ये आंसर लिखने पर मेरा 1 मार्क क्यों कटेगा? प्लस c। प्लस सी। सर मैं गए सिंगल सिंगल लोगैरिथम। ओ, एज अ सिंगल लोगैरिथम, आई इग्नोर दैट, मेरा फिर भी 1 मार्क कट जाएगा। तो प्लस सी तो मैं छोड़ देता हूँ, इन दोनों में से मैं 3/2 कॉमन ले लेता हूँ और फिर ln भी कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 2x। दोनों -3 क्यों आ रहे हैं मेरे? एक प्लस था ना, बाद वाला प्लस था, ओके। भाई कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे, इफ देर इज इवन स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन। ठीक है, पार्ट सी भी है, ओके। इन्हीं लिमिट्स, इन्हीं इसी इंटीग्रेशन पे आप लिमिट्स लगानी है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए। 2 मिनट है हमारे पास। 2 को उधर भेज दो, 3 को डिवाइड कर दो।
और इधर अप्लाई कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना बनेगा ये? ln 7 बनेगा। अब साइन क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे ln कॉमन लेके। ठीक है, ln कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे। बेस शिफ्ट कर देंगे। इन दोनों की पावर्स को ऐड करना जरूरी है। 5 और 5 की पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये पावर 5 की बन जाएगी 3/2। मैं बता रहा हूं क्यों जरूरी है। ये 2/3 पावर में चला जाएगा। कितना बन जाएगा ये? ln 5 की पावर क्या बनेगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर से पावर सब कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर क्या बनेगा? नोबडी इज आंसरिंग। 5 की पावर क्या बन जाएगा? 1. 1। Error, do you understand this? No. Why not? Where is the problem? Can you explain why it was to the power 1? ओके, ये e वहां जाएगा। डू यू अग्री कि ये e की पावर 2/3 ln 5 की पावर 3/2 बनेगा? Yes, sir. ओके, ln से पहले जो वैल्यू होती है वो पावर से पीछे ही होती है ना? Yes. चलो, क्या मैं इस पावर को पीछे ला सकता हूँ? You can. तो ये जब ये पीछे आके मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना बनेगा? Oh, it will be 1. Okay. यस, तो मेरे पास e की पावर ln 5 बचेगा। यू शुड ऑल्सो नो कि e और ln एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं हमेशा। ये 5 बन जाएगा। प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे बता दो कि फाइनल आंसर √11 आएगा। कंफर्म कर दो मुझे, ये आएगा या नहीं आएगा? Yes. ठीक है, देन विल कंप्लीट द पेपर इन द नेक्स्ट क्लास। 2-3 क्वेश्चंस बचे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।